Hello students, today we will discuss about the chapter 11th class. Chapter function is going on, and the part of this function is part 4. We will discuss here now. Students, in last video we have discussed the graph of constant function, a parabolic function. Today we will discuss one of the modulus function. Modulus function. तो स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज़ बात करें कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है. तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं फंक्शन इज सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल, दिस इज द नोटेशन ऑफ मॉडुलस एक्स. क्या बोलेंगे? मॉडुलस एक्स. एफ एक्स फंक्शन इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम capital R to capital R, where function is equivalent to these two lines is to be represented modulus and this is to be x. It is known as modulus x or mod x. Both of them is same, or we can say mod x or sometimes modulus x you can also say. So all are same. So students, how we plot the graph? Before plotting the graph, we should understood that this modulus x, what does it mean? So we will describe it first. Whenever this modulus x is equivalent to the x, if x is greater than or equal 0, this modulus x is x whenever x is greater than or equal 0, and this modulus x is minus x whenever x is less than 0. This is the character of this function. Always you know about it कि मोड जो है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ओपन होगा. दिस मोड इज बीइंग ओपन एट x इक्वल 0 बिकॉज whenever this x minus 0 is, it can be right, so it is to be open at x equal 0. Suppose any mode is to be given. One way examples we will take one by one. This x is to be written like that. If I will write like that, so it is same to the given question. So this modulus function will be opened at x equal 0, right? अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं. लेटर ऑन डिफरेंट मोड फंक्शन वी विल टेक एंड एक्सपेंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस कैरेक्टर. इसको हमने कहाँ ओपन किया? एट 0, राइट? क्यों किया? बिकॉज दिस इज टू बी रिटन लाइक दैट and from where we can taken the value where it will be opened, that is x equal 0. Now meaning of this question is to be understood now. So first guys, there is written whenever x is less than 0, which means the values of x is to be taken negative up to infinite. You can take the values of x from capital R that should be less than 0, meaning origin k left में the values of the x is to be taken negative values or up to infinite in the negative. This mode x is to be always written minus of x. Whenever the value of x is equivalent to the 0 or may be greater than 0 up to infinite in the positive to the origin, then this mode x is to be written x. Guys, first the opening of this magnitude of x, or we can say magnitude of x or mode x or modulus of x, all are same. So this magnitude of x is to be opened whenever x is greater than or equal 0, it is x. Whenever x is less than 0, it is minus x. तो अब हम पहले कुछ सर्टेन फंक्शन के मैग्नीट्यूड की ओपनिंग क्लियर करें. whenever the question is like that, in case कैसे ओपन करोगे? तो यहाँ पर x कौन सी वैल्यू पर इट गिव्स रिजल्ट 0? एट x इक्वल 1. इट गिव्स आंसर 0 एट, it gives answer 0.
at value of x, that is 1. So it will open at x equal 1. Whenever x is less than 1, it gives result is minus of 1. Right? Whenever x is greater than or equal 1, it gives x minus 1. So this is the characteristics of this modulus function. First, all of the you should know how this magnitude is to be opened. अरे कहाँ कैसे फर्दर क्लासेस में आप इंटीग्रेशन करेंगे, फर्दर क्लासेस में आप डेरिवेटिव करेंगे, देयर इट शुड बी रिक्वायर्ड टू ओपनिंग दिस मैग्नीट्यूड फंक्शन, हाउ इट विल बी ओपन. स्टूडेंट्स, अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस मैग्नीट्यूड इज ओपन इन ए मैनर ऑफ लाइक दैट. सपोज यहाँ 3 होता तो आप 3 भी ओपन कर देते, लेस देन 3 दिस विल बी ओपन माइनस ऑफ x माइनस 3, और अगर ग्रेटर देन इक्वल 3 देन इट शुड बी रिटन x माइनस 3. नाउ कम ऑन क्वेश्चन. Our question is magnitude of x. Now we will plot the graph. How? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा है whenever x, this x is to be taken from capital R, the domain of this function is capital R, from where you will choose the values of x and place here, find the value of y on behalf of this characteristics. Now come on the point. Suppose we will make the table for this, right? क्या टेबलर फॉर्म बन रही है देखो. whenever x is नेगेटिव, सपोज नेगेटिव 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x दैट इज इक्वलेंट टू द y. कौन है y? मैग्नीट्यूड ऑफ x दैट इज द फंक्शन विच इज y. तो क्या होगा ये? माइनस ऑफ मोड 3. और आपने कहा whenever x is less than 0, exactly x is negative minus 3 in case this magnitude of x is to be written. कैसे लिखा जाएगा? This x is to be written same than minus 3, और outside क्या? 1 of the minus, then it comes plus 3. राइट है? magnitude meaning always positive. Whenever the values of the x is to be taken negative, the result of this function is always gives positive. So it is written plus 3. Suppose x is minus 2. X is minus 2. So y is magnitude of minus 2. Then this x is written same minus 2. And outside applied minus, it convert into plus 2. So guys, opening of this magnitude is to be in that manner. First, this concept is to be very clear in your mind. Opening of magnitude function. Now, whenever x is minus 1, so y equal magnitude of x, magnitude of minus 1, और नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं? आउटसाइड अप्लाइड द माइनस, इट कन्वर्ट इनटू प्लस 1. ऑन डिफरेंट वैल्यूज, फर्स्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. सपोज x इज 0, y इज मैग्नीट्यूड ऑफ x दैट इज इक्वल टू द, और व्हेनेवर x इज इक्वल टू 0 द रिजल्ट इज x, और x कितना है? 0. रिजल्ट कितना? 0. Now whenever x is 1, y equal magnitude of x equal magnitude of 1. Whenever x is greater than 0, then the result is magnitude of x is equivalent to the x. Magnitude of x equivalent to the x. Whenever x is greater than 0, this x is 1 which is greater than 0, so the result is x. On different values you are getting like that. X is 2, y is 2. So many values you are taken. Now we will make the table. For plotting the graph, we just require the tabular form. X, y equal magnitude of x, different values from the capital R. The function is defined from capital R to capital R. So such that minus 3 you take, minus 2 you take, minus 1 you take,
0 you take, 1 you take, 2 you take, 3 and so on in the negative values you can choose. On different value of x you are getting the y, that is minus 3 answer is 3, minus 2 answer is 2, minus 1 1 0 1 2 3 like that, and so many values you are getting on y. Now draw the graph. Draw the scale first, let the scale and plot the graph. Origin, this is x axis, this is y axis. Domain of this function is capital R, meaning number line, right hand. Codomain of this function is capital R, but the range is, on drawing of the graph we conclude it what is the exactly range of this given function. Now draw the graph. Scale, 1 square is 1 unit on x axis, or again 1 square equal 1 unit on y axis. Now this is 1, this is 2, this is 3, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, like that and so on. Whenever x is minus 3, the y is 3, meaning the point we are getting, that is x is minus 3 and y is 3. This is the point first, right है. Point first आपका आ गया, minus 3 is the x, 3 is the y. Point second, minus 2 minus 2. Slightly we will go upside, so exactly the point is this. Point क्या हो गया, minus 2 minus 2. Next point, minus 1 or minus 1. This is the point, and the 0 0, that is the fourth point that is crossing there. 1 1, that is another point. This is 1 1, 2 2, next point, 3 3. So student, we have taken these points on behalf of this tabular form. Drawing is there. Now we join these points. क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं. तो अभी आप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. फुल्ली कंसर्न ऑन द ग्राफिकल वर्क, हाउ इट वुड लाइक टू ड्रॉ, because this drawing is very important. Whoever is to be confused on the drawing of this function, then he cannot be able to describe or how it would be opened. That is another problem for them. So first concern over it, exactly the drawing of this function is to be doing in a manner like that, and how it looks like. Reason is on behalf of tabular form. Now join these points. इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास किस तरह का एक ग्राफिकल वर्क आता है. देखो यहाँ मैंने इस एंड पे एरो लगाई है. अगेन दिस पॉइंट्स आर आल्सो ज्वाइन इन सेम मैनर. थोड़ा सा कर्वेचर ले लिया मैंने, आप प्रॉपर ले लेना, ठीक है. दैट इज ऑन लाइक दैट. यहाँ भी एरो अप्लाई किया है. These arrows shows that this graph can be produced up to any limit on value of x. We are getting the different value of y. This is the graph of y equal magnitude of x. Both hand it shows that arrow. Now x values we are taken from capital R, number line. The domain of this function is conclusion. Domain of fx, that is capital R. Codomain of this function is
codomain of this function is again capital R. That is given in the question. Now the range. Now what we are said about range क्या होगी? रेंज क्या होगी? तो हमने कहा था ऑन कंक्लूडेड दिस ग्राफ वी विल डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द फंक्शन कंक्लूडेड बिफोर. नाउ on different value of x you are getting the value of y that is positive values. All we are getting positive values. Suppose you are taking the value minus 2.5, answer is plus 2.5. It means y is always positive. Y is always positive. और इस पॉजिटिव को डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि जो y है वो क्या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, यस, जीरो के इक्वल हो सकता है, और ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इनफाइनाइट. राइट है? y जो क्या होगा? पॉजिटिव में इक्वल जीरो और मे बी ग्रेटर देन जीरो अप टू इनफाइनाइट. This is a y or which can be written in the form of a bracket like that. This is closed, this is open. I will later on I will describe what does it mean. First, y will be maybe equivalent to the zero, greater than zero up to infinite. This is the y. y क्या हो सकता है? Infinite. देखो y ये रहा, और जीरो पर last value. Other conclusion of this graph, minima of mod x क्या होगा? जीरो. इससे नीचे कर्वेचर नहीं जाएगा. In earlier class I have told for maxima and minima whenever curvature is to be taken turning, whether it may be valley or whether it may be peak. In case both the points are is to be indicated like minima or maxima. This graph is to be take turns at this edge. So this is to be known as minima. Now maxima not defined, proceeding up to any limit. Maxima not defined, right? Minima zero. मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो, बट मिनिमम वैल्यू. और मैक्सिमा नॉट डिफाइंड. राइट है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो x की whenever you will place the value of x is -3 the result is getting 3, and whenever x is 3 the result is getting y equal 3. It means on two different x value you are getting the y that is 1. This is to be known as many one. Many one. This is the -3, this is the 3 on which the y is 3. So this is the characteristic of function is to be many one. राइट है? किस तरह का फंक्शन है ये? many one. स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी एग्जामिन करने का जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू विल एग्जामिन दैट वेदर इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट. सो ये ध्यान रखना है कि जितने कैरेक्टर्स हम किसी फंक्शन पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, all characters you should know how the drawing of this function is to be exactly draw. That should be you know, and these conclusions you will be in your mind what exactly this graph gives us. This is the magnitude of x, this is the mode of x, this is the modulus of x, this is known as magnitude of x also. So different announcement of this function is to be known, but everything is to be
सेम एंड विच इज डिस्क्राइब फर्स्ट। जो मैंने आपको कहा सबसे पहले फंक्शन ओपन होगा। अगर आपको यहाँ x-1 का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, एट x=1 से, राइट है, क्योंकि वहां पर आपने क्या कहा, दिस मैग्नीट्यूड विल बी 0 एट द गिवन वैल्यू ऑफ x=1, so this will be opened at the limit of x=1, may be less than equal 1 or may be greater than 1. So this graph is always passes through the +1, so the minimum of this function is 1 or the range of this function is 1 to infinite, 1 close, y is equivalent to the 1 greater than 1 or up to infinite. So different function is to be opened in a same manner. So every student is to be draw this graph in their copy and explain it in a proper manner. Thereafter we will, whenever we go through with the exercise, then it's very easy for all of them how the exercise will be solved, right? Now come on, one of the example of the mode how magnitude is to be opened, how magnitude is opened, right? फंक्शन को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, यहाँ लिखा x-3, तो अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ x-3 इक्वल, पहले फंक्शन ओपन होगा, तो अभी मैंने आपको कहा दिस वैल्यू ऑफ x इज टू बी 0 ऑन पर्टिकुलर x दैट इज 3, so this magnitude is to be expanded on x=3 means less x=3 which is written x-3 on behalf of earlier character, or whenever x is greater equal 3 this is expand like that, right है. तो this expansion it should be clear in your mind first. Suppose the question is to be on behalf of like that, suppose the function is given like that, तब क्या होगा, तो कहाँ ओपन करोगे, this x+3 equal 0 on the value of x-3, so this is to be expanded at x=-3 whenever x is less than -3, this magnitude of x+3 equal, क्या लिखोगे, जब -3 से स्मॉलर वैल्यू लोगे दिस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव, देन दिस इज रिजल्ट इज पॉजिटिव, बट -3 से बड़ी वैल्यू लोगे इट गिव्स ए इक्वल, इसमें आ जाएगा, और ग्रेटर आपने वैल्यू ले ली, अब -3 से स्मॉलर वैल्यू, ध्यान रखना अब थोड़ा सा यहाँ हमने प्रॉपर नहीं लिया, इसको ध्यान रखना, -3 से स्मॉलर, विच आर द स्मॉलर ऑफ -3, नंबर लाइन पे अगर हम एग्जैक्टली देखें तो सपोज -3 इज देयर, तो -3 से स्मॉलर वैल्यूज ये वाली हैं, ध्यान रखना, स्मॉलर का मीनिंग go to the left side of this particular values, -4, -5, these are the smaller value of -3, less than -3, -4 is to be substituted here, it gives negative, और जब नेगेटिव देता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे खोला जाता है, like that, और जब आप -3 से लार्जर वैल्यूज और -3 के इक्वल वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे एट द पोजीशन ऑफ x, then it gives maybe 0 or maybe positive value, whenever this gives positive then it is written same. So this is the opening of this magnitude function. ध्यान रखना नेगेटिव में -3 से स्मॉलर, x is to be less than -3, it means go to the left side of the -3, -4, -5 like that, these are the smaller values of minus, or all we are know about that, in negative values the larger is a smaller to the smallest value. Understood this? So this is the opening of the function, ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है. अभी -3 से स्टार्ट हो गए फंक्शन, क्लियर है, तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ ए मैग्नीट्यूड फंक्शन. स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली जैसा बताया जा रहा है, जैसा किया जा रहा है, आपको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में करना है और क्वेश्चंस को डे बाय डे सॉर्ट आउट करते जाना है, प्रॉब्लम सोल्व करते जाना है, अपने फंक्शन को ड्रॉ करो, प्रॉपरली समझो. जितना इस वर्क के साथ आप इतना स्ट्रगल करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, जितना अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही क्वेश्चन आपका बहुत स्ट्रांग होगा. नाउ कम ऑन अनदर फंक्शन, तो उस फंक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं. वन ऑफ द फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन. कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, सिग्नम फंक्शन. क्या होता है सिग्नम फंक्शन, the function that is such that defined from capital R to R and the fx is the
सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन है क्या? सिग्नम फंक्शन है क्या? तो सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करें। दिस एफ एक्स इज टू बी इक्वलेंट टू द मोड एक्स अपॉन एक्स। सिग्नम फंक्शन का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करें तो ये होता है मोड एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी ओपनिंग हम अभी करेंगे, तो क्या होगी ओपनिंग? देखो, मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल डाउन साइड इज एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, मीनिंग नेगेटिव वैल्यू लिखोगे दिस इज टू बी ओपन लाइक दैट एंड इट गिव्स -1, राइट है। जब आपने x 0 लिया तो ये रिजल्ट देता है 0, और जब आपने x ग्रेटर it is positive then they are same, which is open like that. This is the opening of signum function. Signum function gives three values: -1, 0, 1. -1 whenever x is less than 0, right? 0 whenever x is 0, or 1 whenever x is greater than 1. So today we will conclude our class at this characteristic of signum function. In next class we will discuss how it is to be plotted on the Cartesian system or on a geometrical figure. But today we just describe the function is to be such that R to R fx is a signum function, which is mathematical, it represent like that mod x upon x, and which is opened in a manner like that. So guys, again I will say, you write the description of signum function and state there what is the definition, or try to draw the graph of this function. In next class we will explain, we will understood how it will be plot on the graph paper. Again I will say, what the work is given by your teacher in your videos, so do properly in your copies. Thank you very much.